Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. So are you able to see this screen, wait system Yes, call? sir. So we have been discussing system calls actually, and I'm sorry because we are having now having this class after almost 2 weeks time. But because of some admission related activities, I was busy, so I failed to conduct your classes. But anyways, we were discussing about system calls, and in the category of system calls, we have discussed a number of system calls like fork, uh, like sleep, like get PID, get PPID. We have also seen the concept of zombie. We have seen the concept of orphans, and we also concluded that we should not have the situation where zombies or orphans are created. So how can we avoid that creation? That we'll shortly discuss. And the very important system call, which is helping us in doing this sync between the child and parent, is the wait system call. So the complete syntax of wait system call is ki when we write wait, we have to pass a reference of variable. So status and k, these are the two variables which I'm using in this in the syntax of this wait system call, and we are passing the address of status variable. And by the way, status and k both are of integer type variables. And you know that when we are declaring any variable as integer type in case of C, it takes total 16 bits space. Um, of course, that varies from OS to OS or machine to machine. But here on this machine, we are having total 16 bits assigned to status variable and assigned to variable k, and both are declared as integer variables. So when we are writing this wait system call, we are passing reference of this variable. So in most of the cases, either we make use of this wait system call in this way without returning any value and without holding that return value in the variable which we used to write in the left hand side, we simply write wait 0. Or we can also write k is equal to wait 0. So we need to understand what is the significance of this 0. Basically, what is the significance of status? So what happens when wait system call is executed as part of any process? Say, let us suppose my process is A, and at some point of time in this process, we are making use of wait system call. So what will happen? Prior to that, if suppose process A has created a child process. Now, when this wait system call is encountered, this process A will put into the wait state, and it will wait for whom? It will wait for this child to terminate. And let us suppose the name of this child is B. So now this A will assert a wait loop for itself. It will remain in the wait state till B is not terminated. When B terminates, we are having two possibilities. Either this B terminates successfully, or it may terminate abnormally. When we say successfully, that means it's a normal termination, or it may terminate abnormally, or it may be unsuccessful situation. So already we have discussed that we are having a variable called dollar question mark. And what is the purpose of that dollar question mark? It used to return the exit status of the previously executed command. So the return status may be 0, or return status may be a non-zero value. It may be a non-zero value. So when it is 0, that indicates the previous command was successful. When it is non-zero value, then we know that it is abnormal termination, and it may be a situation of any error. ठीक है, तो किसी भी कमांड का या तो सक्सेस स्टेटस होता है या वो अनसक्सेसफुल स्टेटस अपना रिटर्न करता है. वैसे ही यहाँ पे भी when B is terminated, it may be terminated either successfully, or it may get terminated unsuccessfully or abnormally for that matter. So that status is also returned back to this process P. Now we know that when we are making use of functions do return only a single value. So we are having only one single variable written in the left hand side, which has to capture the value returned by this function.
But here you know that when we are making use of the concept called call by reference, so it is also possible that implicitly we can pass on any number of values. So anything which you modify can be passed on to any other calling point by using pointers. So here ampersand status is a variable which is getting updated when the child is terminated. So what will happen when this wait system call is executed as part of this process A? This process A will put itself into a wait state. It will wait for whom? It will wait for completion of this process B. Now, when the process B is completed, it is returning a signal back to the parent that it has terminated. Now, when this signal comes to B, the B comes to A comes to know that the process B is terminated and it can go ahead. But at the same time, this variable status is also updated according to the status of this B, whether it was completed successfully or normally, or it was completed unsuccessfully or abnormally. So that is also reflected in status variable. And how does this status get reflected in the status variable? That we'll see in example. Basically, what is happening when the process is terminated normally or successfully, then out of these 16 bits of status variable, the higher order 8 bits are updated. The higher order 8 bits are updated, resetting the lower order 8 bits to 0. तो सारी के सारी जो 8 बिट्स लो ऑर्डर की होती हैं वो 0 हो जाती हैं, और जो हाई ऑर्डर की बिट्स होती हैं वो सब सेट हो जाती हैं. किस वैल्यू से सेट होती हैं? दैट इज द वैल्यू रिटर्न बाय दिस बी. ठीक है, तो विल सी एग्जांपल कि कैसे ऐसा होता है. और अगर ये अनसक्सेसफुली या अबनॉर्मली टर्मिनेट होता है तो हायर ऑर्डर बिट्स जो होती हैं वो सब 0 सेट हो जाती हैं, और जो एबनॉर्मल स्टेटस का जो रिफ्लेक्शन है वो लोअर ऑर्डर बिट्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो यहाँ पे अपडेट हो जाती है, लोअर ऑर्डर 8 बिट्स. ठीक है, तो दिस विल सी विद एन एग्जांपल कि हाउ इट इज हैपनिंग. बट बिफोर दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस. द एडवांटेज इज since child is executed in parallel to parent, we are simply nullifying the probability of getting this process A completed before process B, because when process A has to wait for completion of B, so obviously we are rejecting the possibility of orphan process, because A will never terminate before B. So there is no situation where B can become an orphan process. So एक तो ये हो गया कि ऑर्फन नहीं बनेंगे, और दूसरा ज़ुम्बी. ज़ुम्बी कब बनते हैं? when any child process is terminated without giving any information back to parent. So parent is not aware of that the child is terminated. So that situation will also not happen in this case. Why? Because when this B is terminated, it is also updating the parent about its terminating status. So because of that only the process A comes to know that B is terminated, and since this status is informed back to A, so the entry corresponding to this B will also be removed from the process table, which was not getting removed in case of Zoom is minded. But now it is getting removed. So we are nullifying the possibility of getting orphans. We are rejecting the possibility of getting the zombies created by just merely use of wait system call. ठीक है, so we'll see an example कि कैसे इसको करते हैं, यूज कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर. So now you can see in this program, here we are making use of wait.h file. It's a header file which is having the prototype of wait function. So we are making use of this wait over here. Then remaining two files, we already know that whenever we have to write a program, we have to include
in the default mode stdio.h and uni std.h file. Now p is equal to fork we are using to create a child process. Then this is the segment which is executed as part of parent. And what is happening here? The first function which we are using is a wait 0. So wait 0 means this wait system call will put this parent process into wait, because if p is greater than 0, this condition is true only in case of parent. So wait 0 will put that parent into wait, and 0 inside the bracket is indicating the successful termination. See, here we are not much interested to come to know about the actual termination status of that process. That's why we are writing constant 0. Okay. But we'll see in some other example that how can we hold that, or how can we capture that normal or abnormal termination status also in the variable. And for that purpose here we have to write some variable, but otherwise we are writing normally constant 0. That indicates that we are not worried about the termination status, whether it was successful or unsuccessful. We are presuming that it's successful, that's why we are writing 0. But we are more interested to know the PID returned by this wait, and which PID is returned by this wait is the child terminated just now. So what is happening? This program with p is equal to 4 is creating a child process, and now child and parent both will compete with each other. This segment is executed as part of parent only. When PID is equal to wait 0, this system call is encountered. The parent will put into wait state, and it will remain in that loop unless until the child is completing its execution. So what will happen? Let us suppose parent is getting the turn first. So because of p greater than 0, it is executing this case, and here PID is equal to wait 0 will put this parent into wait state. Now it will not further execute. It has to wait for the completion of the child process. Now eventually the CPU slots will come back to the child process. Child process is also having the same code, but for child only this portion is executable, because if p is greater than 0, condition is false in case of child. So this part is executed, and what child is doing, it is simply printing the message I am child with this PID and my parent's PID is this one. After that it is terminated. So when it is terminated, in the meantime the slots are coming back to the parent. Now when the child is terminated, the PID of that newly terminated child will be returned by this wait system call. So that will be now stored in PID variable. So now you can say कि in the parent process, the child PID is stored in two variables. One initially when we used p is equal to 4. So that time only when the child was created, the PID of that child was returned back to p, and this p variable was having that child PID in the code of parent. But when the same code as part of child is having p is equal to 0. Similarly, further when PID is equal to wait 0 is executed, it will put the parent into wait state. It will wait for child. When the child is terminated, the PID of that child is returned back to parent process. Now that PID we are holding in PID variable. So now we can the parent can further resume its execution. Now it is printing I am, because it has come out of this wait state, because child is terminated. So because of that only this wait has executed now, and now the child is coming out of this, parent is coming out of this wait loop, and now it is executing I am parent with PID this, my child PID is this, okay, and my parent PID is this. After that it is also printing the child just terminated was 1 with PID this one. So I am making use of PID variable over here, but you know that this PID and this p variable p both are having the same value, because initially when the child was created p was having the PID of that child, and the same the same PID was returned and it was stored in PID variable also. Okay. But anyways, conceptually we are just trying to understand how we are making use of this return value. Now by the way, what is happening if 3 or 4 child processes are created by the same parent, then of course it has to make use of 3 or 4 wait system calls, because for every process it has to wait for its completion. So if 3 child processes created by any parent process, it has to assert wait for all the 3 processes by using explicit 3 wait system calls. तो 3 बार ये wait को use करेगा, और इन तीनों में से कौन सा child सबसे पहले terminate होगा no one knows, लेकिन उसमें से जो भी पहले terminate होगा, जो पहला वाला wait है
वो उसे करस्पॉन्डिंग जो है उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, उसकी पीआईडी को रिटर्न करेगा, एंड दैट पीआईडी विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल विच वी आर राइटिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो वो उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो अगर कभी हमें ये मैसेज प्रिंट करना हो कि कौन कौन से प्रोसेस किस ऑर्डर में टर्मिनेट हुए हैं, तो दैट कैन आल्सो बी प्रिंटेड, बिकॉज वी मे बी राइटिंग पीआईडी 1 इज इक्वल टू वेट 0, पीआईडी 2 इज इक्वल टू वेट 0, पीआईडी 3 इज इक्वल टू वेट 0। नाउ वी कैन प्रिंट पीआईडी 1, पीआईडी 2, पीआईडी 3। ठीक है, तो इसमें से पीआईडी 1 जो है वो करस्पॉन्डिंग हो सकता है कि 3 में से जो सबसे पहले टर्मिनेट हुआ उसकी पीआईडी जो है वो पीआईडी 1 में स्टोर हो जाएगी, जो सेकेंड टाइम पे हुआ उसका पीआईडी 2 में स्टोर हो जाएगा, जो थर्ड स्टेट पे हुआ वो पीआईडी 3 में स्टोर हो जाएगा। तो ये रिटर्न स्टेटस का हम प्रिंट कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। अब इसमें देखिए, इसमें कोई ऑर्फन या ज़ोंबी क्रिएट नहीं हो सकता। आपको जैसे मैंने कोड समझाया था, तो उसमें व्हाट हैपेंड कि जब वो चाइल्ड वाला सेगमेंट ही पहले एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अगर पेरेंट का अगर एग्जीक्यूट हुआ भी तब भी क्या होगा, पेरेंट का इफ p इज ग्रेटर देन 0 के तुरंत बाद जो है वेट सिस्टम कॉल है, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली पेरेंट विल पुट इटसेल्फ इनटू वेट स्टेट एंड इट विल स्टार्ट वेटिंग फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो इवन इफ पेरेंट इज गेटिंग द टर्न फर्स्ट, eventually the child will be the first to execute, because parent will stop because of wait system call, so it will keep waiting for the termination of child। तो again the child will get the turn। अगर child को पहले ही turn मिल जाता है then also it's okay, because then तो child will simply put the message I am child with this and my parent PID is this, और उसके बाद control जो है वो return हो जाएगी parent के पास। अब उसमें wait system call जो है वो भी अपना loop जो है हटा देगी। why? because child is terminated। तो चाइल्ड का जो रिटर्न पीआईडी है दैट विल बी स्टोर्ड इन द पीआईडी वेरिएबल विच वी आर राइटिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद फिर पेरेंट ने प्रिंट किया आई एम पेरेंट विद पीआईडी दिस एंड माय चाइल्ड्स पीआईडी इज दिस, द पेरेंट ऑफ पेरेंट प्रोसेस इज 3261, और उसके बाद उसने ये मैसेज दिया चाइल्ड जस्ट टर्मिनेटेड वाज 1 विद पीआईडी। अब आप देखिए, इसमें जो वेट सिस्टम कॉल था उसने ये वैल्यू रिटर्न करी थी 3405, एंड दैट कैन बी वेरीफाइड आल्सो, क्योंकि जो चाइल्ड की पीआईडी है वो 3405 ही है। तो इसका मतलब है कि पेरेंट को पता है कि अब ये 3405 वाला जो चाइल्ड है ये टर्मिनेट कर चुका है। नाउ ऐसे ही एक हम प्रोग्राम और देख रहे हैं जिसमें वी आर मेकिंग यूज ऑफ टू प्रोसेसेस। नाउ you look at this code, p1 is equal to 4, with that we are creating the first process। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि प्रोसेस हैं दो बार p1 is equal to 4 करके तुरंत बाद p2 is equal to 4, so what will happen, total 4 processes will be created, क्योंकि पहला जो p1 is equal to 4 है that will let this parent to create a child, तो अब ये दो प्रोसेस हो गए। अगला वाला जो p2 is equal to 4 है that will be executed as part of parent also as part of newly created child also। तो पेरेंट एक और प्रोसेस क्रिएट किया उसने चाइल्ड, और उधर चाइल्ड प्रोसेस ने भी एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, तो नाउ वी आर हैविंग टोटल 4 प्रोसेसेस। आउट ऑफ दिस 4 प्रोसेस, one is at the top which is basically the parent process which is at the root side, और उसके बाद उसके अंदर दो सिबलिंग होंगे, एक p1 is equal to 4 की वजह से, एक p2 is equal to 4 की वजह से। उसके बाद जो p1 4 की वजह से जो चाइल्ड क्रिएट हुआ है उसके अंदर भी उससे भी एक चाइल्ड क्रिएट हुआ है फर्दर, तो इसका मतलब टोटल 4 हो गए। तो यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं कि पेरेंट हैज टू क्रिएट ओनली 2 चाइल्ड प्रोसेस एंड बोथ आर सिबलिंग, both belong to the same parent, so we have to put this p2 is equal to 4 in the condition which simply ensures that this p2 is equal to 4 should execute only for the parent process, not for the child process which was created because of p1 is equal to 4। तो पहले तो p1 is equal to 4 से पेरेंट और चाइल्ड क्रिएट हो गए, ये हम सबको मालूम है। उसके बाद ये कंडीशन जो है वो केवल पेरेंट प्रोसेस में ट्रू रहा। पेरेंट प्रोसेस में फिर अगला स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट हुआ, p2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे एक चाइल्ड और क्रिएट हुआ। ठीक है, और ये किसने किया, सेम पेरेंट का एक चाइल्ड क्रिएट हुआ। तो नाउ इट इज हैविंग 2 चाइल्ड प्रोसेसेस।
ठीक है, एक पहली वाली फोर्क की वजह से, एक दूसरी वाली फोर्क की वजह से। एंड द नंबर ऑफ टोटल प्रोसेस इन द रैम राइट नाउ दे आर 3 ओनली, बिकॉज चाइल्ड जो है हैज नॉट एग्जीक्यूटेड P2 इज इक्वल टू फोर्क, तो इसलिए इस चाइल्ड का कोई जो है प्रोसेस और फर्दर क्रिएट नहीं हुआ, तो 3 प्रोसेस हो गए। अब यहाँ पे जो पहली ये कंडीशन है, इफ P1 इज इक्वल टू P1 ग्रेटर देन 0, तो दिस विल बी ट्रू ओनली इन केस ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट। P1 इज ग्रेटर देन 0 एंड P2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों की जो दोनों क्रिएटेड चाइल्ड की जो PIDs हैं वो P1 और P2 में स्टोर्ड हैं, और ये कंडीशन जो है ट्रू होगी केवल पेरेंट प्रोसेस के केस में। सो व्हाट पेरेंट इज डूइंग, इट इज असर्टिंग अ वेट T1 इज इक्वल टू वेट 0, तो इसने एक वेट जो है एक चाइल्ड के लिए असर्ट किया, और दूसरा वेट जो है इसने दूसरे चाइल्ड के लिए असर्ट किया। ठीक है, नाउ आउट ऑफ दिस T1 is equal to weight or T2 is equal to which weight is letting the parent to come out of that is the first one, पहले तो यही होगा, लेकिन ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, अभी दो चाइल्ड क्रिएट हुए हैं, एक P1 इज इक्वल टू 4 से, एक P2 इज इक्वल टू 4 से, लेकिन इसमें से कौन सा चाइल्ड पहले अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन जो भी पहले अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा उसी से T1 इज इक्वल टू वेट 0 वाला जो है ये ओवर होगी, और इसके बाद पेरेंट जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो पेरेंट विल सिंपली पुट दिस मैसेज ऑन द स्क्रीन कि जो पहला चाइल्ड है विच इज टर्मिनेटेड इज विच वन, तो उसकी PID इट विल डिस्प्ले। उसके साथ ही ये T2 इज इक्वल टू वेट के साथ अगेन इट विल पुट इनटू वेट स्टेट, इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट चाइल्ड टू टर्मिनेट। ठीक है, when the next child is terminated it is also printing its PID on the screen। ये वाला जो मैसेज है इफ P1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, P1 इज इक्वल टू 0 किसके केस में होगा, केवल चाइल्ड प्रोसेस के केस में, तो उसने क्या किया है, चाइल्ड इज स्लीपिंग फॉर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स। ठीक है, और इसने लिखा आई एम फर्स्ट चाइल्ड विथ PID दिस। P2 0 किस में होगा, P2 0 होगा जो सेकेंड चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ था उसमें, तो उसने वो 5 सेकेंड के लिए स्लीप हुआ, और उसने लिखा आई एम सेकेंड चाइल्ड विद PID दिस एंड आई एम गेटिंग टर्मिनेटेड। ठीक है, तो ये दोनों जो चाइल्ड प्रोसेस है ये डिस्प्ले करेंगे। आई सपोज नाउ इट इज क्लियर कि एक पेरेंट के साथ हमने दो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए हैं कंडीशनली, और अगर हम ऐसा नहीं करते एंड वी आर नॉट पुटिंग दिस सेकेंड fork in the in some condition, so what will happen, total 4 process would have been created। ठीक है, where 2 process belong to the same level, जो second level होगा फर्स्ट लेवल पे द पेरेंट इटसेल्फ, एंड एक थर्ड लेवल पे होगा जो कि सबसे पहले क्रिएटेड चाइल्ड का एक चाइल्ड प्रोसेस होगा। सो बहरहाल जस्ट टू सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, now deliberately I have put this message actually कि जो सेकंड चाइल्ड है उसमें देखिए मैंने स्लीप 5 डाला है, उसका जो स्लीपिंग टाइम है वो मैंने कम रखा है, जस्ट टू मेक श्योर दैट सेकंड चाइल्ड इज टर्मिनेटेड फर्स्ट। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे उसने सेकंड चाइल्ड ने एक मैसेज दिया आई एम सेकंड चाइल्ड विद PID दिस एंड आई एम गेटिंग टर्मिनेटेड। ठीक है, फिर उसने लिखा कि माई चाइल्ड PID दिस इज टर्मिनेटेड फर्स्ट, ये पेरेंट मैसेज दे रहा है, और पेरेंट ने जो पहला वाला वेट है वो किससे करस्पॉन्डिंग माना, सेकंड चाइल्ड के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि सेकंड का टर्मिनेशन पहले हुआ। So because of that only parent is printing the message I am child with my child with PID 3429, which is matching with the second child's PID. So my child with PID 3429 is terminated first. ठीक है, then the second the first child I am first child with PID this and I am getting terminated. So this will be terminated because it was having a longer delay loop. So because of that only its execution is slightly delayed, and because of that only this T2 is equal to wait 0 will be executed later on, and it will be taking care of whom, it will be taking care of this first child, वो पहले चाइल्ड की केयर करेगा क्योंकि ये बाद में टर्मिनेट हो रहा है, तो सेकेंड वेट जो है ऑब्वियसली वो फर्स्ट चाइल्ड के लिए हुई, तो यहाँ पे दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द मैसेज माई चाइल्ड विद PID 3428 इज टर्मिनेटेड सेकेंड। ठीक है,
तो नेक्स्ट ये टर्मिनेट हुआ. तो इज इट क्लियर? इफ एनीबडी इज हैविंग एनी confusion about it, so please let me know so that I can re-explain this. Please acknowledge it whether you have got it or not, है ना? अगर आपको समझ में आया तो हाँ करिए. Now let us see the next program. This is weight 3.c. Now this is slightly enhanced than what we have done so far. What is happening here? Here we are interested not only to understand the PID of the terminated child, but we are also interested to understand how that child was terminated, whether it was terminated normally or it was terminated abnormally. And in the syntax of wait system call, I just explained you that we can write one integer variable in the left hand side which has to hold the return value of wait system call, and what wait system call is returning directly to this variable is actually PID of the terminated child. One variable we are writing inside the bracket of wait system call, and that variable actually is passed as a argument in the form of address of that variable. So that variable is updated as per the terminating status of the child, कि whether it was terminated normally or it was terminated abnormally. मैंने पहले कहा कि ये 16 बिट का वेरिएबल है और इसके दो पार्ट आप समझें, एक 8 बिट का लोअर पार्ट और एक 8 बिट का अपर पार्ट हायर साइड का. तो जो जब ये नॉर्मल टर्मिनेशन होता है चाइल्ड प्रोसेस का, तो उस केस में व्हाट इज हैपनिंग, इट इज अपडेटिंग द हायर 8 ऑर्डर बिट्स and resetting the lower order 8 bits to 0. If the child is terminated normally, then it is updating the higher order 8 bits with the return status and resetting the lower order 8 bits to 0. If the child is terminated abnormally, then what will happen? It will update the lower order 8 bits, resetting the higher order 8 bits to 0. Higher order 8 bits को वो 0 सेट कर देता है. Now, how do we capture it? कि रिटर्न स्टेटस उसका है क्या? हाउ डू वी कैप्चर? हेलो, मेरी क्लास चल रही, बाद में बात करेंगे. So here we are having this PID is equal to fork. If PID is equal to 0, this condition is true only in case of child. Now what child is doing, it is just printing I am child with PID this, my parent PID is this, and at the same time it is terminated with exit 3, because what exit is doing, exit is simply terminating the child process and returning, or any process for that matter where we are executing exit, and the return status or the status of this child will be returned back to operating system, and whatever number we write inside the bracket, that will be returned back to the operating system. Normally एग्जिट का हम लोग यूज नहीं करते. जब प्रोग्राम अपने आप एग्जिट होता है, टर्मिनेट होता है, तो वो अपने आप एक सक्सेस का जो है स्टेटस रिटर्न करता है ओएस को, और वो 0 होता है लाइनेस के केस में, और कोई एक नंबर होता है इन केस ऑफ एबनॉर्मल टर्मिनेशन. यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें जो ये एग्जिट 3 हम यूज कर रहे हैं, डेलिबरेटली हमने यहाँ 3 यूज किया, लेकिन टर्मिनेशन यहाँ पे क्या है, सक्सेसफुल है, क्योंकि when exit is executed, it is not executed because of any error, rather we have written explicitly exit 3. So we are terminating that process, and at the same time we are returning 3 back to the parent process. हम 3 को रिटर्न कर रहे हैं पेरेंट को. ठीक है, ये इसलिए क्योंकि 0 से हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमने भी बताया कि सक्सेस स्टेटस रिफ्लेक्ट कैसे होता है कि वो नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ, कि लोअर ऑर्डर 8 बिट्स जो होती हैं वो 0 सेट हो जाती हैं, और हायर ऑर्डर 8 बिट्स जो है वो अपडेट हो जाती हैं. अब वो अपडेट किस में होती हैं, जो उसका रिटर्न वैल्यू है. मोस्टली in the normal circumstances, any program which is terminated successfully is returning 0. So in that case we can never understand ki higher order bits are updated, because 0 will keep all the zeros as it is.
So we are deliberately returning 3 even if this is the successful. So what should happen actually? जब ये 3 रिटर्न होगा तो ये कहाँ पे जाना चाहिए? It should update the higher order 8 bits and the lower order 8 bits should be set to 0. So we'll see this impact ki how it is happening. अब इसमें this can be understand from this example कि अगर suppose जैसे मैंने अभी कहा कि हायर ऑर्डर 8 बिट्स जो है अपडेट हो जाएंगी, तो लोअर ऑर्डर 8 बिट्स क्या हो जाएंगी? दे विल बी रीसेट टू 0. सो आई एम राइटिंग these lower order 8 bits, and since we are returning 3, so what will happen? The higher order 8 bits will be set to return value. इसमें तो कोई confusion नहीं है because these are the higher order 8 bits and these are the lower order 8 bits, and I have told you that in the normal or successful termination the lower order 8 bits are set to 0 and the higher order 8 bits will be having the reflection of the return value. So what is the return value in that case? It was 3 only, तो वो यहाँ अपडेट हो गई. अगर ये अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन होता तो वैल्यू कहाँ पे अपडेट होती? इस वाले लोअर ऑर्डर में, और हायर ऑर्डर क्या हो जाती? सारी की सारी 0 हो जाती. अब इस जो रिटर्न वैल्यू है उसको कैप्चर कैसे करेंगे? दैट will be clear when you see this code. See. So now in the code what is happening? This portion I suppose you understood that the child is just executed and it has completed its execution, because if the child is not getting the turn, then who will get? The parent will get, and parent will be having this condition false in its case. So else portion will be executed, and what is the first statement in the else portion? It is the wait. So because of wait, the parent will assert a wait for itself and it will put into the wait state. So it will never execute further. It will wait for the termination of child. So what will happen? Eventually the turn will come back to the child and the child will execute. Now when the child will execute, this condition is true and the child is executing I am child with this, and it is also terminating. ठीक है, ये terminate हो गया by returning the value 3. जैसे ये terminate हुआ, this wait will bring the parent out of this wait state. तो उससे क्या होगा? This newly terminated child's PID will be stored in the CP variable. इसमें store हो जाएगी, and this status variable will also be updated. How it is getting updated? That I just explained to you, that the higher order 8 bits will be having the first 2 bits as 1 1. The remaining 6 bits will be 0 0 0 only. The lower order 8 bits will all be set to 0. ठीक है, ये क्यों हो रहा है? Because the child is terminated successfully. कब ये child abnormally terminate होता? अगर मैंने इस child में if I am using some infinite loop, because of that only the child is getting hang. अब जब child hang हो गया तो उसके बाद हम इसको बाहर कैसे लाएंगे? We have to put some interrupt like control C. So that will cause this child to terminate abnormally. So in that case, this status will be updated differently than what right now it is getting updated. जो अभी अपडेट हुआ है उससे ये डिफरेंट अपडेट होता. तब क्या होता? जो कंट्रोल सी का जो भी रिटर्न वैल्यू होती, जो उसका करस्पॉन्डिंग सिग्नल होता है, जो नंबर होता, दैट इज गेटिंग अपडेटेड इन द लोअर ऑर्डर 8 बिट्स एंड हायर ऑर्डर 8 बिट्स विल बी सेट टू 0. वो सारी 0 सेट हो गई होती. फिर बहरहाल जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस सिंपली, we are just taking this normal termination that can make you this concept to understand rather in the easier way. So that's why it is happening that child is terminated and it is returning 3. Now if you look at this status variable, it is total integer variable having total 16 bits. Out of these 16 bits, the 8 bits will be set to 0, which are lower order 8 bits, and the higher order 8 bits will be having the first 2 bits as 1 1 and the remaining 2 bits are 0 0 0. Why 1 1? Because 1 and 1 in binary, they will be actually 3 in decimal, and exit 3 से हमने 3 ही रिटर्न किया इन डेसिमल नंबर सिस्टम. तो स्टेटस अपडेट हो जाएगा, उसमें 1 1 आ जाएगा हायर ऑर्डर 8 बिट्स में. मतलब अगर आप देखें तो पहले की 8 बिट जो हैं फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड, ऑल द बिट्स विल बी सेट टू 0. देन 8 के बाद जो 9वीं बिट होगी दैट विल बी 1. 10th bit will also be 1 and the remaining all 6 bits will be set to 0. ठीक है, this is the outcome of this normal termination.
So now this CP is equal to weight ampersand status will be updated. तो status variable update हो जाएगा. जो PID है child की that will be stored in CP variable. After that we are using ampersand ampersand symbol, and you know that it is a bitwise ending operation because double ampersand is and logical or logical and, but here single ampersand is actually used as bitwise operator. So what it is doing, it is ending, it is performing the ending operation. On which values it is performing the ending operation? 0xff का मतलब होता है कि in hexadecimal notation we are having a 16-bit number having with all lower order 8 bits to 1 1. The higher order 8 bits will be set to 0. तो इसको मैं बताता हूं कि कैसे. I am just explaining कि how it is happening. जैसे वहां पे लिखा है status and then ampersand 0xff. Now what is the meaning of that? पहले तो आप ये समझिए कि what we are having in the status 1 2 3 4 5 6 7 8, all 8 bits are set to 0. Then the higher order 8 bits are updated. तो पहली उसमें से 2 बिट जो 9th और 10th बिट है ये 0 1 1 हो जाएंगी, एंड ऑल द रिमेनिंग 6 बिट्स दे विल बी 0 0 0. तो ये तो वेरिएबल हो गया स्टेटस. दूसरा इसमें है हेक्साडेसिमल में 0xff. एक्चुअली क्या है कि जब आप एंड करेंगे तो इसमें आपने डबल एफ लिखा है, तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड. तो दिस विल बी 1 1 1 1, दिस विल बी 1 1 1 1. ठीक है. ऑल द रिमेनिंग बिट्स विल बी 0 0 0. अगर आप आठों जगह 1 चाहते तो आप क्या लिखते हैं? 0xFFFF, क्योंकि हर एक f करस्पॉन्डिंग टू क्या है? 4 1 के. हमने केवल 2 f लिखा है, एंड वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड. या अगर डेसिमल में देखें तो इकाई से हम शुरू करते हैं, तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड. ठीक है. तो दैट्स व्हाई these 8 times 1 we are writing. Now what is in between them? This ampersand. Ampersand is doing what? It is a bitwise AND. Bitwise AND operation. So this will AND, तो 0 and 1 will be 0. So ये सारी बिट्स जो हैं 0 हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह 0 है. यहाँ पे 1 1 है, लेकिन जिसके साथ हम कर रहे हैं वो भी 0 है, तो सब के सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. तो इसका मतलब सारी वैल्यूज कितनी हो गई? 0. Now come to the coding side. What we are having in the coding? If you look at this, is not equal to 0. So since the child was terminated normally, and because of that only 1 1 came where? It came in the higher order 8 bits. अगर ये abnormal termination होता तो उसका 3 कहाँ पे अपडेट होता? लोअर ऑर्डर 8 बिट्स में. और लोअर ऑर्डर 8 बिट्स का मतलब क्या है कि आपकी जो व्हाइट स्क्रीन है उसमें कौन सी 1 1 कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता? 1 1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता इन जगहों पे, ये 1 1 होता, बाकी सारे 0 होते. तब अगर आप इसी 0xFF से इसको एंड करते तो ये 1 1 आपके आउटपुट में आ जाता. तो ये नॉर्मल टर्मिनेशन का इंडिकेशन हो जाता, क्योंकि इसकी वैल्यू डेसिमल में क्या बनती? 3. ये 0 नहीं होता. अभी नॉर्मल टर्मिनेशन में क्या है? दिस हैज बिकम 0. So because of that only, when you look at this coding side, this status ampersand 0xFF not equal to 0, this condition becomes false. This condition becomes false. 0 not equal to 0. This condition is false. So what will happen? Abnormal termination message will not be displayed on the screen. Rather, else part will be executed. Now else part में क्या हो रहा है? Normal termination of child, मतलब उसका जो PID है वो आ जाएगा. Then it is also printing the exit code. And exit code में what should we have? 3. लेकिन if you look at the number, तो 16-bit number में जो उसका एक्चुअल कन्वर्जन होगा वो तो पहली जो राइट मोस्ट 0 है वहां से स्टार्ट होगा. हायर ऑर्डर 8 बिट्स मॉडिफाई जरूर हुआ है, लेकिन वैल्यू कितनी बनेगी? वैल्यू बनेगी, अगर आप इस फिर से उसी पे आ जाएं व्हाइट स्क्रीन पे जो हम लोगों ने दिखाया है, तो वैल्यू कहाँ से बनेगी? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड
ये दिस इज तो 1 2 4 8 16 32 64 128, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 256। तो आपका वैल्यू क्या बनी 256 इंटू 1, ठीक है। और अगला 1 इंटू 512 प्लस बाकी सब क्या हो गया 000। तो ये टोटल कितना नंबर हो गया दिस इज 512 and 256. This will be 8, this will be 6, this will be 7, 768। ये नंबर बन गया। अब अगर हमें एक्चुअल 3 नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाई 256। अगर मैं 256 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर होगा, अगर उस रिमाइंडर को हम देखें तो दैट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस जो रिटर्न हुई होगी, क्योंकि रिटर्न होने की वैल्यू तो रिटर्न हुई थी 3, लेकिन वो अपडेट कहाँ हुई और हायर ऑर्डर 8 बिट्स में। तो टोटल जो वैल्यू कैलकुलेट हुई वो 768 हो गई, लेकिन हमें तो रिट्रीव करना है 3 ओनली, ठीक है। तो जो भी नंबर बनता है उसको अगर हम 256 से डिवाइड करते चलें तो यहाँ रिमाइंडर अपने आप आपको मिल जाएगा जो एक्चुअल नंबर होगा। तो यहाँ पे 768 को जब आप 256 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मच यू आर गेटिंग, 256 से नहीं, this will be just a minute, I'm just looking at the code side। 256 का ही है, यस। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर नहीं सॉरी क्वोशंट है, तो क्वोशंट बचेगा 3, क्योंकि हियर वी आर यूजिंग स्टेटस डिवाइड बाय 256। तो 768 डिवाइड बाय 256, तो नंबर विल बी 3 ओनली, सो दैट 3 इज द एक्चुअल return value of the child process। So that child is return 3, that we have now, that parent has now noted down, and we have got the right answer on the screen ki normal termination of the child this and exit code is 3। So we can just see the execution of this program। So message is I am child with PID 3516 and my parent PID. This message we have got because of child process only। And the next message which we are receiving is normal termination of 3516। ठीक है, तो it is rightly this message actually is getting printed because of the code of parent process, जो उसका printf statement था कि normal termination of 3516 जो child की PID है with exit code 3। So rightly this 3 has been captured। So by this way, the parent is not only getting the PID of the child which has terminated, but it is also getting the information that how that child is terminated, whether it was terminated normally or it was terminated abnormally। Okay. So since I was unable to get any feedback from your side during the explanation, so I do not understand whether you have got it or not, but please go through this program, try to understand, and if you are having any problem ask me so that I can re-explain this program। And as a assignment you have to write a program where you have to terminate a child abnormally। And how can we create a situation of abnormal termination where you have to execute the statement like where you have to execute the key sequence like control C, because we can put that child process into infinite loop and then
the normal termination of that child will not be possible. So we have to use Control C to terminate that program. When we are using Control C to terminate that program, it will obviously be returning some value, and that value you have to capture, and that value you have to print on the screen, indicating that this is the abnormal termination. And how do we get that reflection? In that case, whatever sequence of code we have written, like I have written status ampersand 0x double f. So that condition will become true in that case, in case of abnormal termination. So that condition will become true. So when that condition will become true, then obviously when we print the message, we'll get the message it's a abnormal termination. And of course, in order to print the value of that lower order 8 bits, you don't need to divide it to by 256. Reason being ki now the lower order 8 bits are getting updated. So if if 3 is the number which is returned back to parent in the as a result of abnormal termination, then only the lower order two bits, the first bit and second bit, will be set to 1 1. So the decimal corresponding to this 1 1 will be 3 only. So that 3 will be displayed on the screen. तो आपको इसका एक प्रोग्राम लिखना होगा for abnormal termination, so that I can understand whether you have got the concept or not. The remaining command is one pipe command and exec, that we'll discuss tomorrow in the next lecture. So with this, I am ending my lecture here. I hope you must have understood it. But if you are having any problem, please let me know so that I can re-explain this concept. But I am sure once you are having the code available to you, you just read out that code 2 or 3 times and you revisit this lecture. Just have a review of this lecture so that you can understand what I have explained in this lecture. And then you try to execute the program for abnormal termination also.